Jaya Śrī Caitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Śrī Caitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujo kanakavadato, saṅkīrtanai kapitaro kamalaya taksho, Vishvambaro dvijavaro yugadharma palo, Vande jagat priyakaro karunavataro. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya. Okay. So I'm very happy to speak in front of all of you on this occasion of Shri Gaur Purnima. महाराज बहुत खुश है कि आप लोग हम लोगों से वो गौर पूर्णिमा के बारे में बताएंगे. I will chant one verse and little purport by Srila Prabhupada from Śrī Caitanya Charitamrita and then speak a little bit about this topic. महाराज चैतन्य चरितामृत में से एक श्लोक बोलेंगे और उसके बाद प्रभुपाद के परपट और ट्रांसलेशन को भी पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे. Nagare nagare bhrame kīrtana kariyā, नगरे नगरे bhrame kīrtana kariyā, bhāsāila tri-bhuvana prema-bhakti diyā. Nagare nagare bhrame kīrtana kariyā, bhāsāila tri-bhuvana prema-bhakti diyā. Nagare nagare bhrame kīrtana kariyā, Bhāsāila tri-bhuvana prema-bhakti diyā. This is the verse number 32 from the 13th chapter of Adi-lila Śrī Caitanya Charitamrita. The saṅkīrtana movement went on from one part of the town to another as the Lord wandered everywhere performing kīrtana. In this way, he inundated the whole world by distributing love of Godhead. संकीर्तन In second chapter, 32, 13th chapter. 1:13, Adi-lila 13:32. second second chapter, 32 verse. No, 1:3, 13th chapter. 1:13, 32. Tera. जो संकीर्तन मूवमेंट है वो एक शहर से दूसरे शहर में फैलने लगा. जैसे चैतन्य महाप्रभु हर जगह कीर्तन करने लगे. In this way, he inundated the whole world by distributing love of Godhead. इसी प्रकार उन्होंने पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम से भर दिया. One may raise a question, how all three worlds became inundated with love of Krishna, since Chaitanya Mahāprabhu performed kīrtana only in the Navadvīpa area. कोई सोच सकता है कि महाप्रभु के कीर्तन से पूरा विश्व कैसे आच्छादित हो गया, क्योंकि भगवान ने तो सिर्फ नवद्वीप एरिया में अपना कीर्तन किया था. The answer is that Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu is Krishna himself.
इसका उत्तर ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। The entire cosmic manifestation results from the Lord's first setting it in motion. पूरा सृष्टि का जो मैनिफेस्टेशन है वो भगवान के खुद के उसको मोशन में डालने से होता है। Similarly, since the saṅkīrtana movement was first set in motion 500 years ago by Śrī Caitanya Mahāprabhu's desire that it spread, set in motion 500 by Śrī Caitanya Mahāprabhu's desire that it spread all over the universe, the Krishna consciousness movement, in continuity of that same motion, is now spreading all over the world, and in this way it will gradually spread all over the universe. क्योंकि 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको पहले मोशन में डाला था, पहले इसको स्टार्ट किया था, उसी सेम मोशन में अभी वो आगे बढ़ रहा है और इसी तरह वो धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैलेगा। With the spread of the Krishna consciousness movement, everyone will merge in an ocean of love of Krishna. इस कृष्ण भावनामृत के इस प्रकार के प्रचार से हर कोई कृष्ण भावनामृत रूपी समुद्र में गोते खाएगा। Śrīla Prabhupāda ki jai. Namo Vishnupadaya Krishnāpristhāya Bhutale Śrīmate Bhakti Vijnana Goswami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Panchakalpatarvescha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Śrī Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrīvāsavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Yantah pradishya mama vachimamam prasuptam sanjivayate kila shakti darasvadamna anyam shahasta charana shravana tvagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam aradhya bhagavan vraje shetanestadhama vrindavanam ramya kachidupasana vrajavada vargene kalpitam Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartamahan Śrī Caitanya Mahāprabhur Matavidam Tatradaro Naparaham Svasyastu Vishwasya Kala Prasidatam Dayantu Bhutani Shivam Mithodya Manascha Badram Vajata Tadoksaja Aveshyatam Naumati Atyahaitu Ki. So in this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami says that while wandering in Navadvīpa, going from one village to another village and performing saṅkīrtana, Śrī Caitanya Mahāprabhu tri-bhuvana prema-bhakti diyā gave prema-bhakti to the whole three worlds. जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ये कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे त्रिभुवन को हर जगह पे अपनी प्रेम भक्ति दी, यहाँ संकीर्तन को प्रचार करते हुए। Otherwise, you can also take mic, and I will just speak like this. No, Maharaj. One is up, but No? yes. नहीं Yes, Maharaj. Okay. So one may ask, is it exaggeration? Śrī Caitanya Mahāprabhu is wandering from a couple of villages and then we say whole three worlds are inundated with love of God. कोई सोच सकता है कि ये अतिशयोक्ति है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कुछ गांवों में जाके प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में प्रचार कर दिया, त्रिभुवन में प्रचार कर दिया। And Srila Prabhupada very beautifully explains what does it mean, how it is not exaggeration. श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है।
ये सच है। अतिशयोक्ति नहीं है। जरूर। So Srila Prabhupada said, it's like the Ishvara, God, is creating this world. श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे भगवान स्वयं इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, He is not creating each and every detail of this world. उनको हर एक डिटेल को बनाने की जरूरत नहीं है। He is not coming to build this building and that building to create this world. भगवान खुद एक बिल्डिंग वो बिल्डिंग बनाने के लिए आने की जरूरत नहीं है। He just gives initial push. भगवान एक इनिशियल पुश देते हैं सृजन के लिए। He just sets the whole thing into motion. वो हर पूरी चीज को एक गति में डालते हैं। And everything else goes on automatically because of the energy of his initial motion, initial push. और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आगे जाती है उनके इनिशियल पुश की वजह से। It's only a bad manager is trying to do everything himself, but the good manager, he is not doing anything. He is just, giving little push and everything goes on automatically. हमें अगर हर एक चीज इंडिविजुअली करनी पड़ती है, पर भगवान जब करते हैं तो सिर्फ उनको एक पुश देना पड़ता है और धीरे-धीरे आगे जाता है। I remember that's relevant to people of Ahmedabad. I once came to Akshardham in Delhi when it was just in the process of construction. This huge Akshardham in Delhi was being constructed by Swaminarayan people, and I came before it was constructed. महाराज एक बार अक्षरधाम मंदिर में गए थे और वहां पर कंस्ट्रक्शन के पहले महाराज ने अक्षरधाम मंदिर को देखा था दिल्ली में। Yeah, and when I came, there was so many people, thousands of people, some, carvers were chiseling marble, they were building something, thousands of people swarming. And then I came to the Swamiji, who is in charge of the whole construction. वहाँ पे महाराज ने देखा कि हजारों लोग बहुत सारी नक्काशी काम, बहुत सारा काम कर रहे थे और उस बीच महाराज ने जो स्वामी जी वहाँ के इंचार्ज, उनसे जाके वो मिले। And he's sitting in his office, nobody is there, his desk is completely empty, and he's just like, going like this, very relaxed. महाराज ने वहाँ जाके देखा जो स्वामी वहाँ पे इंचार्ज है, जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रहा है, उनके टेबल पे कुछ भी नहीं था और वो आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए थे। So I immediately realized he's a good manager. और महाराज ने वहाँ जाके रियलाइज किया कि वो बहुत अच्छे व्यवस्थापक हैं। So the good manager is not doing everything himself. He just pushes it and everything goes on automatically on its own. एक अच्छा व्यवस्थापक वो होता है कि जो खुद सारी चीजें नहीं करके इस तरीके से उसको मोशन में डाले कि सारी चीजें अच्छे से हो। Krishna is the best manager. और इसी तरह कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापक है। He doesn't need to do anything. He just desires something and everything takes place automatically. भगवान को स्वयं सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाती है। Śrī Caitanya Mahāprabhu came to this world 500 years ago in the year of 1486 on the 18th of February. चैतन्य महाप्रभु करीब 500 साल पहले 14th of February 1486 में इस धरातल पर पधारे थे। And from the very moment of his descent to this world, he induced people to chant Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और तभी से चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र का जो है गान चालू कर दिया। When he descended to this world, there was a lunar eclipse, and because everyone is afraid of this bad effects of lunar eclipse, all the people in Navadvīpa, they went to Ganga and they were chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. जब महाप्रभु अवतरित हुए थे तब चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण के खराब इफेक्ट से बचने के लिए लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे थे।
Usually people don't remember about God, but when there is something bad is coming, then they immediately remember Hare Krishna. जनरली लोग हरे कृष्णा महामंत्र को नहीं याद करते, पर इस प्रकार की कोई सिचुएशन होती है तो हरे कृष्णा महामंत्र को याद करते हैं. So therefore Chaitanya Mahaprabhu appeared in a seemingly inauspicious moment, because lunar eclipse is not a very auspicious moment. एक तरीके से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण कोई बहुत मतलब एक अशुभ समय है, पर चैतन्य महाप्रभु उसी समय प्रकट हुए. But he made this inauspicious moment, turned this inauspicious moment into auspicious moment, because everyone was chanting Hare Krishna. पर चैतन्य महाप्रभु ने इस अशुभ घड़ी को शुभ घड़ी में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उन्होंने हर एक किसी को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रेरित किया. In the same way, he continues to do this. He's turning very inauspicious time of Kali Yuga, which we are in. It's very inauspicious time, but he's turning this into very auspicious and very good time, because he induces everyone to chant Hare Krishna. इसी प्रकार पूरा कलयुग का जो समय है उसी को अशुभ भी माना जाता है, पर इसी अशुभ समय को चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम के प्रचार के द्वारा शुभ घड़ी में परिवर्तित किया है. So from the very first moment of his appearance, he already revealed his mission. His mission is to induce everyone to chant the holy name of the Lord. आविर्भाव के पहले ही दिन से चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो आविर्भाव का जो लक्ष्य है उसको बताया था. इस तरीके से उन्होंने आविर्भाव के समय ही चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाया. So many people chant different things, but we chant Hare Krishna. कितने लोग अलग-अलग चीजें बोलते हैं, पर हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं. So, and when Śrī Caitanya Mahāprabhu was just a little baby, he continued doing the same thing. You know, he continued inducing everyone to chant Hare Krishna. चैतन्य महाप्रभु उसके बाद थोड़े बड़े बालक भी हुए, फिर भी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए हर किसी को प्रेरित करना चालू रखा. As a little baby, he would start crying, and when he was crying, he couldn't stop. एक बच्चे के रूप में वो बहुत रोते थे और रोते-रोते चुप ही नहीं होते थे. And we all know when the little baby is crying, it's very agitating, especially for the father. और हमें ये पता है कि जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा रोते ही रहता है तो वो बहुत ही द्रवित करने वाला होता है, स्पेशली पिताजी के लिए. And everyone is trying to pacify little baby. Please don't cry, you know. और हर कोई चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे और रोते थे तो उनको चुप कराने का प्रयास करते रहते थे. But he wouldn't stop. Whatever you do, whatever people would do, he wouldn't stop. He would crying more and more and more. और न चाहे कोई कुछ भी करे, चैतन्य महाप्रभु और रोते थे और चुप नहीं होते थे. And then at one point, ladies started clapping their hands and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So all of a sudden, this little Nimai, how he was called, would stop crying. और जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता था, जो छोटे निमाय है वो तुरंत रोना बंद कर देते थे. So very soon, all the ladies in household, they knew how to pacify little baby. और सबको धीरे-धीरे समझ में आ गया कि इस बच्चे को किस तरीके से शांत किया जा सकता है. There was only one upaya, only one way to pacify the baby is to chant the holy name to him. और बच्चे को चुप कराने का एकमात्र उपाय यही था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए. And therefore his name, even though his name was Vishwambar, Nilambar Chakravarti, his grandfather gave him the name Vishwambar, and his mother gave him the name of Nimai. He very soon was known as Gaur Hari. और भले ही उनके नाना नीलंबर चक्रवर्ती ने उनको विश्वंबर नाम दिया था, बाद में उनकी माता ने निमाई नाम दिया था, पर आगे जाके उनका नाम गौर हरि हुआ. This name was given to the household ladies, to the girls who were there. और जो वहाँ पे माताएं आती थी, उनके द्वारा ये नाम दिया गया था.
It's like this, you know, when Hare Krishna devotees from ISKCON go outside and they do Harinam Saṅkīrtana, you know, that people say, here Krishna, Krishna, Krishna goes. जैसे हरे कृष्णा डिवोटीज जब बाहर जाके संकीर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हरे कृष्णा लोग जा रहे हैं, वैसा नामकरण करते हैं. So because this little Nimai, he was so fond of this name Hari, so they called him Hari, Hari, Hari. और यही जो निमाय है जो छोटे थे वो हरि के नाम से इतने प्रसिद्ध हो गए इसी कारण से. And because he was not black, because he was very bright and yellow, so he was called Gaur Hari. और भगवान किसी प्रकार से सोनेरी कलर के थे तो इसलिए उनका नाम गौर हरि रखा गया. And then when he became a little older and he went to school, he started teaching his students by Sanskrit grammar. जब चैतन्य महाप्रभु थोड़े और बड़े हुए स्कूल में जाने लग गए तो वो खुद संस्कृत का जो ग्रामर है व्याकरण है वो पढ़ाते थे. And when he was teaching Sanskrit grammar, how he would teach Sanskrit grammar, he again was taking the holy names of the Lord and was teaching Sanskrit grammar. और वो संस्कृत ग्रामर पढ़ाते समय भी हरि नाम को लेकर उसके द्वारा संस्कृत ग्रामर पढ़ाते थे. Somebody asked him, what is dhatu? What is dhatu according to the Vyakarana? व्याकरण के अनुसार धातु क्या है अगर कोई उनसे प्रश्न पूछता था. And he would say, dhatu means mula, mula means Ishvara, and he would start explaining in this way. वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि धातु एक मूल है, मूल कौन है? ईश्वर है, और इस तरीके से ईश्वर की संज्ञा देते हुए उसको वो एक्सप्लेन करते. What is upasarga? What is pratyaya? And he would always explain, upasarga is Krishna, pratyaya is Krishna, everything is Krishna. और इस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब जो व्याकरण के भाग है उसको भी वो कृष्ण के नाम से रिलेट करके सिखाते थे. Because Krishna himself says in Bhagavad Gita, Vedaischa sarvaira hameva vidyo, Vedanta krit veda videva chaham. क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं कि वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो, कि मैं खुद वेदों का रचयिता हूँ. Krishna himself says that the whole essence of the Vedas, by the Vedas, the purpose of the Vedas is to know me, nothing else. There is nothing else in the Vedas. कृष्ण भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि वेदों का सार जो है वो मुझे जानना है और वेदों में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है. And Śrī Caitanya Mahāprabhu, when he was an adhyapak, when he was a teacher in the toll of Gangadas, he was teaching the same way. और जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब अध्यापक बने वहाँ पे तो वो इसी तरह सिखा रहे थे. But he revealed his mission to the full scale when he went to Gaya and took initiation from Ishwarapuri. पर उन्होंने अपना जो मिशन है वो फुल स्केल में तब बाहर लाए, रिवील किया जब वो गया गए और ईश्वरपुरी से उनकी भेंट हुई. When he got initiation from Ishwarapuri, as he himself explained, gave him this Hare Krishna mantra. जब उन्होंने दीक्षा ली ईश्वरपुरी से तो ईश्वरपुरी ने उनको स्वयं ये पूरा वृत्तांत बताया हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Śrī Caitanya Mahāprabhu explains that he started chanting this Hare Krishna Mahamantra and all of a sudden he started dancing. और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र आया वो सीधे चैंट करने लगे और डांस करने लगे, नृत्य करने लगे. He told to Ishwarapuri when he came next day after this experience, he said, please explain to me what happened to me. Am I going crazy? Am I pagal or who am I? और इस चीज का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने अगले दिन ईश्वरपुरी के साथ आके शेयर किया और बोला कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ, इतना उनको आनंद आ रहा था. I'm chanting this Hare Krishna mantra and tears are flowing and all of a sudden I'm dancing like a madman. What's going on? और ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते ही मेरे अंदर से नृत्य करने की भावना आती है और बहुत आनंद से आच्छादित हो जाता है. And he said, it's actually not me who is dancing. It's the holy name who is dancing through me. और उन्होंने बोला कि ये मैं खुद नृत्य नहीं कर रहा हूँ, ये जो हरि नाम है वो मेरे द्वारा नृत्य करवा रहा है. It's a different
different experience when we, sometimes we feel like dancing and sometimes, we don't feel like dancing when the kirtan is going on. ये पूरा अलग तरीके का अनुभव है कि कभी-कभी हमें नृत्य करने का मन होता है और कभी-कभी नहीं भी होता है. And because everyone is dancing, we also try to do something like this. और क्योंकि हर कोई नृत्य कर रहा है तो हम भी कुछ करने का प्रयत्न करते हैं. But in case of Chaitanya Mahāprabhu, he said, I cannot stop. It's Hare Krishna mantra is dancing through me. चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र मेरे द्वारा ही नृत्य करवा रहा है. Hare Krishna mantra is just dancing on my tongue, and because it's dancing on my tongue, the holy name is dancing on my tongue. I am also following the dance of the holy name. क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे जीवा के ऊपर नृत्य कर रहा है, मेरा जो शरीर है वो भी उसको अनुगत फॉलो कर रहा है. And Ishvara Puri said, my dear child, you are not mad. You're experiencing the real holy name. ईश्वरपुरी ने उनको क्लैरिफाई किया कि आप पागल नहीं हुए हैं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र के असली इफेक्ट को रियलाइज किया है. When we chant, we don't experience the real holy name, the Shuddha Nam. जब हम चैंट करते हैं तो हम शुद्ध नाम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. At best, we experience the shadow of the holy name, the Nama-bhas. सबसे अच्छे से अच्छा हम नामाभास का अनुभव ही कर पा रहे हैं. And therefore, we don't have the same sort of experience as Śrī Caitanya Mahāprabhu had. इसलिए हमें इस प्रकार का अनुभव नहीं हो पा रहा है जैसे चैतन्य महाप्रभु का था. Sometimes, of course, we do experience some sort of ecstasy when we chant the holy name. कभी-कभी एक छोटे से रूप में हमें थोड़ा सा एक अनुभव इस प्रकार का होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं. There was one story in my own life. There was Janmashtami celebration in Moscow. महाराज की खुद के जीवन में जब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ था मॉस्को में, उसके बारे में महाराज बताने जा रहे हैं. And so many people came, thousands of people came during the festival, and they were, feasting and doing some kirtana and this and that. वहाँ मॉस्को में हजारों लोग आए, वहाँ पे आके उन्होंने फीस्ट लिया, डांसिंग किया और पार्टिसिपेट कर रहे थे जन्माष्टमी के वक्त. But then, the main arati is at midnight, at 12 o'clock. क्योंकि जन्माष्टमी की जो मुख्य आरती रात में 12 बजे के बाद होती है. And by 12 o'clock, there was not so many people. There were maybe 1,000 people or maybe few hundreds people left. Everyone else already left the premises of the temple. रात में 12 बजे तक सिर्फ 1000 या उससे थोड़े कम ही लोग बचे थे. उससे पहले सब लोग धीरे-धीरे जा चुके थे. And when we started the saṅkīrtana, one very good kirtaniya started kirtan, and it was such an amazing kirtan, very, very amazing, very deep kirtan was going on. और एक कीर्तनीय ने वहाँ पे कीर्तन शुरू किया. वो इतना अद्भुत कीर्तन कर रहे थे कि वो बहुत ही तीव्र था. So at that time I was going through the crowd and I was looking at people, and some people were crying, some people were just chanting, completely absorbed in the holy names. महाराज स्वयं उस वक्त वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कितने लोग रो रहे थे, कितने लोग बहुत ही तीव्रता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे. I was very happy going, looking at people, what's going on. तो महाराज ये देख के बहुत आनंदित हुए. And at that time, one young boy, catched me from behind and asked me, "Can I ask you one question?" और उसी समय एक नौजवान व्यक्ति महाराज के पास आया और उन्होंने बोला कि मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ. And he said, and I said, "Yes, of course, please ask your question." महाराज ने बोला हाँ आप जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं. And he said, "I'm for the first time in your temple. उन्होंने बोला कि मैं प्रथम बार आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, आपके मंदिर में. I've never been here. This is the first time I came, and this is the first time when I chant this Hare Krishna, ये मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी किया है. But can you please explain to me why I'm always crying when I chant Hare Krishna?" उन्होंने महाराज से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि जब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ मेरे अंदर से एक आनंद और रुदन की भावना क्यों आती है.
He said, "Is something wrong with me?" And I said, "No, everything is okay with you. Something is wrong with me because I am not crying." महाराज ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं, आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पर मुझे वो आध्यात्मिक रुदन नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है. So, in the same way, Śrī Caitanya Mahāprabhu, when he told Ishvarapuri, Ishvarapuri said to him, nothing is wrong with you, you're right, you're all right. इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से ये चीजें पूछी, तो ईश्वरपुरी ने बोला कि नहीं, ये एकदम सही है. So when Śrī Caitanya Mahāprabhu came back, he started, as we know, this saṅkīrtana movement for 1 year. It was going on in Srivasangam under the locked doors, and then he went out with all his people to the streets of Navadvīpa. चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड के 1 साल से भी ज्यादा वहाँ पे नवद्वीप में ये संकीर्तन उन्होंने फैलाया, और शिवासांगन में वो करते थे, वहाँ से भी वो स्ट्रीट पे भी निकलते थे संकीर्तन करते हुए. But as Srila Prabhupada explains in this purport, his real purpose was not only to give the holy name to the citizens of Navadvīpa, but to give the holy name to the whole world. चैतन्य महाप्रभु जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि उनका जो हरिनाम देने का लक्ष्य सिर्फ नवद्वीप में नहीं था, पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार का उनका लक्ष्य था. And not only to give the holy name to the whole world, but to also give the Krishna prema to the whole world. और सिर्फ हरिनाम ही नहीं, कृष्ण प्रेम भी वो पूरे विश्व में प्रदान करना चाहते थे. Cool language. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. So that's the real purpose, because he wanted to share this happiness which was there in his heart. उनका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि उनकी जो हृदय में ये तीव्र आनंद की जो भावना है, वो सबके साथ वो प्रदान करना चाहते थे. When we experience this very strong happiness within our heart, we really want to share this happiness with everyone. जब हमें ये तीव्र आनंद की अनुभूति खुद होती है, तो हम सबके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. When we experience little happiness, we're not very eager to share this little happiness with others. जब हमें बहुत कम आनंद की अनुभूति होती है, तो हम ज्यादा किसी के साथ इसको शेयर करने के विचार नहीं करते. But if the happiness is too much, we want just to embrace everyone and to let them experience the same thing as we. पर जब हमें बहुत ही तीव्र और बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब हम सबको गले लगा के इसको बांटना चाहते हैं. It is said that there are two main purposes why Śrī Caitanya Mahāprabhu came to this world. चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 2 मुख्य उद्देश्य हैं. One is internal purpose and one is external purpose. एक आंतरिक है और एक बाह्य है. But internal purpose and external purpose, they are very much connected with each other. आंतरिक कारण और बाह्य कारण वो एक दूसरे से बहुत ही जुड़ाव रखते हैं. The main purpose is internal. जो मुख्य उद्देश्य है वो आंतरिक कारण है. His internal purpose was to experience the love of Srimati Radharani, which she feels when she meets Krishna. उनका प्रथम आंतरिक कारण आविर्भाव का था कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम अनुभव करती है, उसको अनुभव करना. Or which she experienced when she is in separation with Krishna. या फिर जब वो कृष्ण के वियोग में होती है, उस वक्त का. And his external purpose is to give Harinam Saṅkīrtana and Raganuga Bhakti to the whole world. और उनका बाह्य कारण आविर्भाव का है कि रागानुगा भक्ति और हरिनाम का दूसरों को वितरित करना. But the external purpose is only possible when the internal purpose is fulfilled. पर ये बाह्य जो कारण है वो तभी सार्थक हो सकता है जब आंतरिक कारण संपूर्ण रूप से सार्थक हो. You can only give to somebody something if you have it. You cannot give something which you don't have. अगर आपके पास कोई चीज है तभी आप किसी को दे सकते हैं. अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो आपको किसी को नहीं दे पाएंगे. Sometimes devotees of ISKCON, they are very eager to spread Krishna consciousness.
बहुत बार हमारे इस्कॉन में बहुत भक्त दूसरे को भक्ति देने के लिए बहुत ईगर होते हैं, बहुत लालायित होते हैं। But we can only spread Krishna consciousness if we have Krishna consciousness. We cannot spread it otherwise. और हम कृष्ण भक्ति का प्रचार तभी कर पाएंगे जब हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति होगी, अदरवाइज हम वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। So in the same way, Śrī Caitanya Mahāprabhu was spreading love of God, or this, not even love of God, but the happiness of the love of God, because he experienced this happiness himself. और इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये जो लव ऑफ गॉड है, कृष्ण भगवान का प्रेम, वो इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। He had so much love and so much happiness and so much, so much ananda, that the whole world could be inundated by this ananda. उनके अंदर इतना कृष्ण भाव था, इतना कृष्ण के प्रति भक्ति थी और आनंद था कि इसी आनंद से पूरा ब्रह्मांड आच्छादित हो सकता था। And therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami says that he was distributing love of Godhead all over the world. और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक में कहा है कि वो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। But this process of inundating the whole world with Krishna consciousness is a gradual process, as much as the creation of the world is the gradual process. जैसे इस सृष्टि का जो है बनना वो एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, धीरे-धीरे होता है, वैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार भी धीरे-धीरे होता है। There is no doubt that Śrī Caitanya Mahāprabhu can give love of Godhead to everyone because he has so much. There is no scarcity of love of Godhead in his heart. इसमें कोई संशय नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी हर किसी को कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के पास इतनी कृष्ण भक्ति है। His desire is also there. He wants us to get this love of God. और उनकी ये इच्छा भी है कि वो हर किसी को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। But now it depends on us whether we want to get this love of God or not. पर प्रश्न ये है कि हम खुद ये लेना चाहते हैं कि नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। To get love of God, we have to really meditate on Lord Chaitanya Mahāprabhu. अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें चैतन्य महाप्रभु के ऊपर का चिंतन करना चाहिए। It's a very scientific process. ये एक बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रोसेस है। Narada Muni explains in the 7th canto of Srimad Bhagavatam that you basically become like what you are meditating upon. 7वें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं कि आप जो सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। If you meditate upon something, you will gradually become like this, like the object of your meditation. आप जिसके बारे में सोचते रहते हैं, धीरे-धीरे आप उसी की तरह बनते जाते हैं। And in the same way, if we meditate on Lord Chaitanya Mahāprabhu, we'll become like him. इसी प्रकार अगर आप चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चिंतन करते हैं तो आप उनकी तरह धीरे-धीरे बनते जाएंगे। We'll never become exactly like him, but we become almost like him. हम पूरी तरह तो उनकी तरह नहीं बन सकते, पर थोड़ा बहुत उनकी तरह बन सकते हैं। It really depends on the quality of our meditation. If our meditation is very tivra, is very dridha, then we become almost like him. ये हमारे जो चिंतन है उसकी गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो बहुत तीव्र है तो हम ऑलमोस्ट उनकी तरह बन सकते हैं। If we just, little bit meditate on Chaitanya Mahāprabhu, it's good. If we come for, 30 seconds in front of Gaur-Nitai and say, Hari Bol, I'm here. No problem. It's okay. No problem. कभी-कभी अगर बहुत कम हम चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते हैं, 30 सेकंड के लिए उनके सामने आके चले जाते हैं, तो ठीक है। But if we really meditate on the teachings of Lord Chaitanya, explained in Chaitanya Charitamrita, in his mission, and if we serve him, because the service is the most intense way of meditating on somebody, then the feelings which he has will come to our heart. अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो चैतन्य चरितामृत में दी हुई है, उनके जीवन, उनके ऊपर तीव्र रूप से चिंतन करते हैं, तो धीरे-धीरे वो चीजें हमारे अंदर आ सकती है। It's a question of establishing the connection between us and Śrī Caitanya Mahāprabhu.
वो हमारे और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जुड़ाव करने की जो पद्धति है उसके ऊपर का है प्रश्न है। The stronger the connection, the easier the process of our internal transformation, so that we will be able to experience the same thing which Chaitanya Mahāprabhu experiences. ये जो आंतरिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो उतनी ही ज्यादा तेज होगी जितना हमारा जुड़ाव चैतन्य महाप्रभु के प्रति ज्यादा होगा। And the strongest connection can be established between two human beings by the way of service. दो लोगों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होता है, वो सेवा के रूप से ही बढ़ सकता है। Like why parents are so attached to children and children are not so attached to parents. हम देखते हैं कि माता-पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, पर बच्चे माता-पिता से इतने ज्यादा आसक्त नहीं होते। Because parents serve the children and children usually don't serve the parents. क्योंकि माता-पिता बच्चों की बहुत सेवा करते हैं, पर बच्चे जनरली इतनी सेवा नहीं करते हैं। And therefore the connection between the parents and the children are so strong. और इसीलिए माता-पिता और उनके बच्चों के बीच का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही तीव्र होता है। In the same way, if we try to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu, our connection becomes stronger and stronger and stronger. इसी प्रकार अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे तो हमारे उनसे जुड़ाव है वो बहुत ही तीव्र होता ही जाएगा। This is the method which Srila Prabhupada explained to all of us. इसी प्रक्रिया को श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है। I have one friend. He is an acharya in Madhva Sampradaya. He is a teacher, very great pandit. महाराज के एक मित्र है जो मध्व संप्रदाय में है, वो बहुत ही बड़े पंडित हैं। His name is Suresh Acharya. उनका नाम सुरेश आचार्य है। And in his office, where from he is teaching, there is a big picture of Srila Prabhupada. और उनकी जो कार्यालय है जहाँ से वो चीजों को सिखाते हैं वहाँ पे श्रील प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा फोटो है। And this is the photo of Srila Prabhupada in San Francisco when Srila Prabhupada is chanting together with all his first followers, hippies in San Francisco. श्रील प्रभुपाद का वो फोटो है जहाँ पे वो सैन फ्रांसिस्को में अपने शिष्यों के साथ हरिनाम जप कर रहे हैं। And he told me that when I come first to my office to do my service, I first offer pranam to my guru and then I offer pranam to Srila Prabhupada. और उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार यहाँ पे आते हैं कार्यालय में तो वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद तुरंत श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। He said, why? Because Srila Prabhupada, he said, I don't know anyone who served his Guru Maharaj as Srila Prabhupada. उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी भी किसी को इस प्रकार अपने गुरु की सेवा करते नहीं देखा जैसे श्रील प्रभुपाद को उन्होंने देखा। He says, Srila Prabhupada is not sevaka, he is mahasevaka. उन्होंने बोला कि श्रील प्रभुपाद सेवक ही नहीं एक महासेवक है। He asked me once, when you go to some city to preach, do you expect that somebody will pick you up in the airport? उन्होंने पूछा महाराज श्री से कि आप कहीं पे किसी सिटी में जाते हैं तो आप ये आशा रखते हैं कि कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आएगा? I said, yes, of course. जरूर। And then he asked me, do you expect that somebody will put you in a separate room and give you all the comforts? I said, yes, of course. महाराज को उन्होंने पूछा कि आपको अलग से रूम मिलेगा और कुछ सुविधाएं मिलेगी, ऐसी आपको आशा है? तो महाराज ने हाँ बोला। And he said, when Srila Prabhupada came to America, did he expect this or not? उन्होंने बोला कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए प्रथम बार तो उन्होंने ये चीज का एक्सपेक्ट किया। Srila Prabhupada explained to us what I want to say is that if we want to really experience this happiness of Hare Krishna Mahamantra or Krishna consciousness, which Śrī Caitanya Mahāprabhu came to give, we have to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu and his mission. श्रील प्रभुपाद हमें ये समझाते हैं कि हम सच में अगर इस चीज का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें उनके मिशन में सेवा करनी चाहिए। When we do this Harinam saṅkīrtana, we do some service in the temple, or we preach, or we do some other things,
at the same time we should meditate. This is my service to Śrī Caitanya Mahāprabhu. This is my service to my Guru Maharaj, to Srila Prabhupada and to Chaitanya Mahāprabhu ultimately. जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें हर बार इस चीज का चिंतन करते रहना चाहिए कि ये मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ. Because the desire of Śrī Caitanya Mahāprabhu is very clear. He wants everyone to chant the holy name. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है वो बहुत साफ है कि वो हर किसी को हरिनाम के जप में आच्छादित करना चाहते हैं. And service means that we serve not other desires, but the desires of somebody else. We do which somebody else wants us to do. सेवा का मतलब ये होता है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी इच्छा की पूर्ति करें, न कि स्वयं की इच्छा की पूर्ति. Service, seva, doesn't mean that I do whatever I like and I call it service. Service doesn't mean that I do whatever I like to do and then I call it service. This is my service. सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहे वो करूं और फिर कह दूं कि ये सेवा है. I anyway like to do it, but this is my seva. This is not seva. कोई चीज हमें करना anyway पसंद है, तो हम वही करते रहते हैं, तो वो सेवा नहीं है. Seva means that I do not which I want to do, but which somebody else wants to do, with somebody whom I serve. जिसको मैं सेवा करना चाहता हूँ, वो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, उसके लिए नहीं, तो उसको एक सही मायने में सेवा माना जाएगा. So the desire of Śrī Caitanya Mahāprabhu is very clear. He wants to give the holy name to the whole world. That's his desire. That's his plan. चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है वो बहुत साफ है. वो पूरे विश्व को हरिनाम देना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं. Not only to Navadvīpa, not only to West Bengal, not only to the whole Bharat, but to the whole world. And Srila Prabhupada says, not only to the whole world, to the whole universe. सिर्फ नवदीप नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना चाहते हैं. और श्रील प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना चाहते हैं. I don't know how we're going to do this. We'll have a rocket which is going to the space with Harinam Saṅkīrtana. So we'll do this. हमें अभी ये पता नहीं हम कैसे करेंगे. हम रॉकेट लेके जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में कि क्या करेंगे, पर ये जरूर होगा. But the desire of Śrī Caitanya Mahāprabhu is very clear. चैतन्य महाप्रभु की इच्छा साफ है. He wants everyone to become happy. वो हर किसी को खुश देखना चाहते हैं. But how you become happy if you forget God? पर आप आनंदित कैसे हो सकते हैं अगर आप भगवान को भूल रहे हैं? How you become happy if you only serve yourself and if you only think about yourself? अगर आप स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? There is no chance to become happy if we only think about ourselves. खुश रहने का कोई चांस ही नहीं है अगर हम खुद के बारे में ही सोचते हैं. Because when people think about themselves, they can only get anxiety and problems. जब खुद के बारे में ही हम सोचते हैं तो सिर्फ चिंता होती है और तकलीफें बढ़ती है. Śrī Caitanya Mahāprabhu wants us to become happy, and for that, Srila Prabhupada explained to us how we can become happy. चैतन्य महाप्रभु हमें खुश देखना चाहते हैं और श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से खुश रहना. He gave this formula to us, the formula of happiness. चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये फॉर्मूला दिया है खुश होने का. You chant the holy name yourself. आप खुद हरि नाम लीजिए. You give the holy name to others, to everyone else who is around you. आपके आसपास जो भी लोग हैं उसको हरि नाम दीजिए. You think about Krishna all the time because chanting the holy name means thinking about Krishna. आप सतत कृष्ण भगवान का चिंतन कीजिए क्योंकि हरि नाम लेना ही कृष्ण भगवान का चिंतन करना है. And then for sure you will become happy. और धीरे-धीरे surely आप खुश रहेंगे. धीरे नहीं है, Surely. अचानक. अच्छा. So that's the formula which Śrī Caitanya Mahāprabhu came to give. और यही फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आया है. And there is one more secret to this formula, secret ingredient to this formula. और इसका एक और रहस्य भी है. Once Srila Prabhupada's godbrother O.B.L. Kapoor asked Srila Prabhupada when he was
distributing his medicines. जब शिला प्रभुपाद के गुरु भाई कपूर जी उन्होंने शिला प्रभुपाद को पूछा था जब वो मेडिसिन दे रहे थे He said, can you give me some tonic which will make me strong? शिला प्रभुपाद को उन्होंने पूछा कि आप ऐसी कोई टॉनिक मुझे दे सकते हैं जो मुझे और शक्तिशाली बनाए Srila Prabhupada said, no, I cannot give you the tonic, but I can give you something more than this tonic. शिला प्रभुपाद ने कहा ऐसी टॉनिक तो मैं आपको नहीं दे सकता पर उससे कई गुना अच्छा मैं आपको कुछ दे सकता हूं. The main tonic is Krishna Prem, so this is what I can give. मुख्य टॉनिक जो है कृष्ण प्रेम है जो मैं दे सकता हूं. So Kapoor says, how do I get it? तो कपूर जी ने बोला कि किस प्रकार मुझे प्राप्त होगा. He said, I can give you the formula of this tonic. शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसका फॉर्मूला आपको दे सकता हूं. He said, what is the formula of this tonic? उन्होंने पूछा कि क्या फॉर्मूला है इसका. And Prabhupada answered, Trinadapi sunichina, tarorapi sahishnuna, amanina manadina kirtaniya sadhari. शिला प्रभुपाद ने जवाब दिया त्रिनादपि सुनीचेन तरोरी व सहिष्णु नाम अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदाहरि. So that's the formula of this Krishna Prema. कृष्ण भक्ति प्रेम प्राप्त करने का ये फॉर्मूला है. Śrī Caitanya Mahāprabhu came to give the holy name, but he also explained us the method how we should chant the holy name. चैतन्य महाप्रभु हरि नाम देने आए हैं पर किस प्रकार हरि नाम लेना चाहिए वो भी उन्होंने बताया है. And if we remember about him, meditate about him, and at the same time remember this instruction, the most important instruction about being humble as the blade of grass, tolerant as a tree, giving respect to everyone and not expecting respect to ourselves, then for sure we become happy and everyone else around us will become happy as well. अगर हम चैतन्य महाप्रभु के इस खास आदेश का पालन करते हुए हरि नाम लेते हैं कि हमें एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना है, एक तृण से भी ज्यादा नम्र बनना है, तो हम हरि नाम का सही आस्वादन कर पाएंगे. And because Srila Prabhupada knew this secret, because Srila Prabhupada knew perfectly well the desire of Chaitanya Mahāprabhu and wanted to fulfill this desire, so many miracles happened. क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये रहस्य जानते थे और वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जानते थे, इसी कारण इतने सारे चमत्कारिक परिवर्तन हुए. There is one little story from the life of Srila Prabhupada which I want to share with you. महाराज श्री श्रील प्रभुपाद के जीवन से एक कहानी शेयर करना चाहेंगे. This story happened when Srila Prabhupada was not a sannyasi yet even. He was living in Mathura, in the temple of his godbrother. He was Vanaprastha at that time, in the temple of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. जब भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के यहाँ पे सन्यासी भी नहीं थे श्रील प्रभुपाद, उस समय की एक कथा है. In Mathura there is this Keshavji Gaudiya Math, and Srila Prabhupada was like, a Vanaprastha living in this temple. श्रील प्रभुपाद मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ में वानप्रस्थ के रूप में रहते थे. And once he went to a preaching program with one brahmachari of the temple. एक बार वो एक प्रचार के प्रोग्राम में गए एक ब्रह्मचारी के साथ. And they came to the temple, back to the temple quite late. उनको मठ में वापस आते-आते काफी देर हो गई. And they were late for prasadam, so they came to the place, prasadam hall, and they saw some cold sabji and cold rice and some cold chapatis there. वो प्रसादम हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ठंडी सब्जी, ठंडी चपाती और ठंडा राइस वहाँ पे था. And Prabhupada was putting on his plate, some cold rice and cold sabji and cold chapatis. और यही चीजें ठंडा चावल, चपाती और दाल श्रील प्रभुपाद उनकी प्लेट्स में उस वक्त ले रहे थे. And at that time, one family, some rich people family, came to visit the temple. और उसी समय एक धनाढ्य परिवार वहाँ पे आया मठ में अंदर. And they looked in the room and they saw Srila Prabhupada and they were not really interested and they closed the door and went somewhere else.
वो रूम में आए, श्रील प्रभुपाद को देखा और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वहां से चले गए. And Prabhupada at that time, this brahmachari, he is remembering, at that time Prabhupada started chuckling. और उसी ब्रह्मचारी बता रहे थे कि उसी वक्त श्रील प्रभुपाद ने एक स्माइल दी वहां से. And then Prabhupada said, these people, what did they see? They see one old man who is taking cold sabji and dry chapatis and trying to eat this cold sabji and dry chapatis. श्रील प्रभुपाद ने उस वक्त बोला कि इन लोगों ने क्या देखा है कि एक वृद्ध इंसान एक ठंडी चपाती, ठंडा राइस दाल ले रहा है. But they don't know the plans of Śrī Caitanya Mahāprabhu, which he is going to fulfill through this old man. पर उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का ये प्लान नहीं पता जो मेरे थ्रू वो फुलफिल करने वाले हैं. So Srila Prabhupada, he fulfilled this plan of Śrī Caitanya Mahāprabhu, and he writes about this in this purport. और जो इस परपट में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वही चैतन्य महाप्रभु का प्लान श्रील प्रभुपाद ने फुलफिल किया है. And we are very fortunate because we can also become the part of this grand plan of Śrī Caitanya Mahāprabhu by the mercy of Srila Prabhupada. हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस योजना के एक भाग बन सकते हैं. And in this way we can become happy and everyone else will become happy. इस प्रकार हम आनंदित हो सकते हैं और दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं. Otherwise people, what they do, they just fight with each other. वरना लोग एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही रहते हैं. Yeah. They just, they fight. The husband and wife will fight in the family, and then the countries will fight, and there is some war here and there and everywhere. इसी प्रकार पति पत्नी, दूसरे फैमिलीज और अलग-अलग देश, युद्ध ये सब होता रहेगा. So it's better if we spread saṅkīrtana movement than to live in the world where everyone is fighting with each other. ये बहुत ही बेहतर होगा अगर हम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करें इसके कंपैरिजन में कि हम एक खराब विश्व में रहें. Then people will not have time for fighting. अगर ये हुआ तो किसी के पास लड़ने का समय ही नहीं बचेगा. Because they have to chant 16 rounds at least. क्योंकि उनको रोज वर्णमाला का जप करना होगा. So anyway, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.